Just a minute. Yeah. So we were seeing the deployment diagram in the last class, right? Just a minute. Yeah. So we were seeing the deployment diagram. Okay. And just a second. Yeah. So we have seen why we use a deployment diagram. So basically, deployment diagram is your one step ahead of all the diagrams we have seen, especially your component diagram. Okay, component diagram can also show the same kind of information, but it is not mostly focused on the hardware. So when you want to show which software is going to use what hardware, a kind of interaction between hardware and software, we go for the deployment diagrams. Okay, and here there are two things. This is how deployment diagram looks like. You have nodes. Nodes are basically your hardware. Okay, and then you have artifacts. Artifacts are the software. So basically, this representation shows you this diagram. Basically, this shows you that you have two devices, node 1 and another device. Both of these devices are hardware. This node 1 device is basically implementing artifact 1 and artifact 2. Artifacts are basically any software or any kind of file, basically you can say, okay, .jar file, .dll files, any file. So when I say software, basically it's file only, right? Because any piece of, either you are running a game, you are running the DLL files. Okay, you are running any piece of e-card software, you are running a .jar files. When I say software, it's nothing but a kind of file only that needs to be run or that needs to be executed. And to execute that file or to execute that artifacts, we need this node 1. So node 1 is basically helping us to implement artifact 1 and artifact 2. And this also shows you that which is this relationship. Which is this relationship? Dotted lines है arrow के साथ. Dependency, right? That artifact 1 is dependent on artifact 2. Okay, and this आज हम लोग देखेंगे. वैसे this is your normal association, simple association जो use case diagram में दिखा था. This is showing you that node 1 is in contact with node 2 और node 1 is interacting with or associated with node 2. बस इतना simple सही है. इतना ही है deployment diagram, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. Okay. Then we have seen when I say a system. System means any piece of software that you develop and any software and hardware that needs. Suppose you have developed this software S1, and to run this software you need another software S2 and another hardware H1. So everything combined is known as a system. All the softwares that you develop and all the software and hardware that enable you to run that developed software. That is the name of system. This definition I will ask you in one of the tests. Then why you use deployment diagrams? All those theoretical points are here. घूम फिर के बात वही है. When you want to show the physical overview of your system, exact implementation or exact relationship between software and hardware, or you want to show how every piece of software or every piece of code is deployed in your system. When I'm saying system here, it means the previous meaning. Okay, when how every piece of software is deployed in your system. That's it in a simple line. What other softwares? क्योंकि अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन दिखाना तो उसके लिए बहुत सारे डायग्राम्स हमने देख लिया. क्लास डायग्राम बना लो. अगर स्टैटिक डायग्राम्स ही बनाने हैं, you can make a class diagram. You can make a component diagram also. If you want to only show the interaction between softwares. But if you want to show the interaction between softwares plus which hardware those software needs, हार्डवेयर वाला पार्ट आ जाता है, तब डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स की बात करते हैं हम लोग. वही सारे यहाँ पे मेंशन्ड है. Okay, then the first component of a deployment diagram is a node. Okay, node is represented by this cuboid shape जो भी है ये. Okay, they have basically two types. One is your device node. This is by default. चाहे डिवाइस स्टीरियोटाइप यूज करो चाहे ना करो. फॉर एग्जांपल सी दिस डीबी सर्वर. चाहे मैं इस तरह डीबी सर्वर लिखूं, चाहे मैं हैश ये स्टीरियोटाइप डिवाइस के अंदर डीबी सर्वर लिखूं, दोनों का मतलब सेम है. दिस इज प्योर हार्डवेयर. दिस कैन बी एनी प्योर हार्डवेयर डिवाइस. Another kind of node is your execution environment. Okay, if you want to show any software as a node,
Okay, by default nodes are going to be hardware. But if there is any software like operating system, if you want to show any software as a node, you are going to use the stereotype execution environment. This statement I will ask you in that test. Okay, and but the condition here is not all the softwares you can use as a node. What is the condition? Can you use any software as a execution environment stereotype in a deployment diagram? Or is there any condition? बताओ जल्दी बताओ ना, टेस्ट में पूछूंगा सीधा. What is the condition? We have discussed this in the last class. What is the condition? In which condition you can represent a software as an execution environment stereotype? A software which is used by other, not used by, basically a software which implements other software and hardware, you can say. A software, because just remember the example of operating system, right? What does the operating system does? It is a software and it manages other software along with their hardware. Right? Operating system का काम क्या होता है? तो भी आपका प्रोग्राम है, उसको रैम में एक स्पेस देना. That is the only work of operating system. So it is handling the RAM also, the hardware, and it is handling the software also. So if there is any software that handles both software and hardware, or that implements some other softwares in it, right? Madhu, not used by other softwares. If software implements other software, okay, the statement is a bit wrong. If a software implements other software, you can say, then that could be written in the execution environment stereotype. Okay, then the second component of deployment diagram is your artifacts. Artifacts are nothing but, in a simple word, it is software. But when I say software, it means files that are going to be executed. .jar files, .har files, any word file, any PDF file, any text document, कुछ भी, anything is an artifact. Okay, this is represented using three notations. पहला तो या तो simply artifact stereotype use कर लो. Second, you use this page वाला जो ये symbol है, you use this symbol. Third is you use both like this. Okay, कुछ UML, for example, तीनों यूज करने वाली फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन विजुअल पैराडिग्म. स्टार यूएमएल में तीनों वाली फैसिलिटी नहीं है. यू हैव टू यूज द स्टीरियोटाइप आर्टिफैक्ट. सो ये अलग अलग यूएमएल सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से चेंज होता है. दीज आर द थ्री कॉमन रिप्रेजेंटेशंस. You write the artifact stereotype and you write the artifact stereotype, and then here you write the artifact. Fine. Then for example, see this, you have a device means hardware, that is your PC, and you have three artifacts or three software or three files that are needed to be executed by this device. Word processor, spreadsheet, email. ठीक है. So अगर इनको डिप्लॉय करना है, basically you have to deploy the artifacts to a node. अगर टेक्निकल टर्म से बात करें डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स की, so here we are going to deploy artifacts to a node. और इसका मतलब कुछ नहीं है, टेक्निकल टर्म का मतलब ये है कि which software needs which hardware, यही मतलब है इसका. आर्टिफैक्ट सॉफ्टवेयर हो गए, नोड हार्डवेयर हो गए. तो डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू अ हार्डवेयर, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ओके, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू अ नोड. इसको करने के तीन तरीके हैं बेसिकली. फर्स्ट, इस वाले नोड को जो ये है, एक्सपैंड यूजिंग द माउस, और उसके अंदर तीनों उठा के रख दो एक साथ ऐसे. अगर इन तीनों में एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट है तो यू कैन यूज द डिपेंडेंसी एरो आल्सो. ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आर्टिफैक्ट्स के बीच में सिर्फ डिपेंडेंसी एरो यूज कर सकते हो और कोई नहीं. देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं होगा. नोड्स के बीच में एसोसिएशन हो सकता है. नोड्स के बीच में एसोसिएशन हो सकता है. कीप दिस थिंग इन माइंड फॉर द टेस्ट. ओके, देयर इज नो एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे ऐसे एसोसिएट नहीं कर सकते इन दोनों को. दिस इज नॉट द करेक्ट वे. यू कैन शो डिपेंडेंसी बिटवीन आर्टिफैक्ट्स. अगर एसोसिएशन यूज करना है, सो यू हैव टू एसोसिएट नोड्स ओनली. समझे? टेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट ना, भूल जाओगे ना बाद में जब तक एंड से आएगा. Second way is you can use this deployment arrow, or sorry, this dependency arrow, or dependency arrow पे dependency is a generalized arrow. Dependency is a generalized arrow. I will also ask this question in one of the tests. Okay, dependency is one, this arrow, dependency arrow is one जो आपका use case diagram से deployment diagram तक ज़्यादा बाहर है. ठीक है? Only to change the stereotype here. कभी यहाँ include लिखते हैं, कभी exclude लिखते हैं. Right? कभी inherit लिखा है, कभी deploy लिखा है, कभी realize लिखा है इसके ऊपर. So the stereotypes keep on getting changed, but this relationship remains constant. Okay, so this is your second way to deploy an artifact to a node is this way.
अगर अंदर नहीं रखना तो यू कैन यूज अ डिपेंडेंसी और उसके ऊपर डिप्लॉय कीवर्ड यूज करो, उसके ऊपर डिप्लॉय कीवर्ड यूज कर लो, उसके ऊपर डिप्लॉय कीवर्ड यूज कर लो। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज आर्टिफैक्ट से नोड की तरफ एरो जाएगा, क्योंकि नोड से आर्टिफैक्ट की तरफ नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखो। थर्ड वे इज द सिंपल, ओके, और द क्लीनर वे, जस्ट एक्सपैंड दिस डिवाइस, इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करो और पूरा पूरा उठा के इसके अंदर आर्टिफैक्ट मत रखो, बस आर्टिफैक्ट का नाम रख दो, जस्ट कीप द आर्टिफैक्ट्स नेम हियर बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेशन आल्सो टेल्स यू द सेम थिंग। देयर इज अ डिवाइस जिसका नाम है डेस्कटॉप पीसी और उसके अंदर 3 आर्टिफैक्ट्स है। कैसे बताए आर्टिफैक्ट्स है? तो ये आर्टिफैक्ट्स कैसे बताए आर्टिफैक्ट्स है? इनके एक्सटेंशन से पता है। एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिफैक्ट खाली ऐसे नहीं लिखना, ईमेल ऐसे नहीं लिख देना आर्टिफैक्ट इस ब्लॉक के अंदर, नया आर्टिफैक्ट नहीं क्लास बन जाएगी नॉर्मल, है ना। डोंट जस्ट राइट आर्टिफैक्ट लाइक दिस, you have to put the extension file of the artifacts afterwards, so it is compulsory. If you want to write any artifact name, you have to put the extension file, jpg, .pdf, .c, .obj, .exe, जो भी है, क्योंकि जनरली they are going to be .exe फाइल only, क्योंकि यही आपके एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। कंपाइल कर देते हो पूरे प्रोग्राम को, सपोज दिस इज अ कंपाइलर, यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज भेजा, इसका आउटपुट मिलता है .obj, दैट इज योर असेंबली लैंग्वेज कोड, फिर ये पास होता है असेंबलर से, फिर आपको फाइनली मिलता है .exe, दैट इज एग्जीक्यूटेबल कोड, और फाइनली ये रन हो, दिस रन्स। तो जो रन हो रही वाली चीज है वही बेसिकली रखते हैं यहाँ पे, ओके, बट एक्सटेंशन इज कंपल्सरी इन आरटी। देन कम्स दी, समझ गया ना किसको डाउट? ओके, दिस इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन बट यू कैन यूज एनी ऑफ द थ्री। एनी डाउट्स? Okay. Then comes one other topic that is known as manifestation. Suppose in your deployment diagram, there are some other components also. Suppose there is a component diagram wala component. Suppose there is a component like this, database manager. हमने component में भी पढ़ा है ना, component का अगर एक diagram if you remember, उसमें हमने देखा था एक 3 ब्लॉक थे, पहला नेम था, दूसरे में provided required interfaces लिखे थे, थर्ड में एक artifacts लिखा था हमने। Remember in the component diagram we have discussed, first component name हुआ, फिर यहाँ पे required और provided interfaces we have written, and in the last we have written artifacts. उसका मतलब क्या था? सपोज देयर इज अ कंपोनेंट नेम एज डेटाबेस मैनेजर, एक कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजर, उसको आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ती है डेटाबेस मैनेजर डॉट डीएलएल। इसका मतलब है दिस कंपोनेंट, डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट नीड्स दिस फाइल टू फुलफिल और टू रन, राइट। इस कंपोनेंट को इस फाइल की जरूरत है, ये मतलब था इसका, राइट। सो इस चीज को आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम में कैसे दिखाओगे? दैट अ कंपोनेंट नीड्स एनी आर्टिफैक्ट और एनी आर्टिफैक्ट इंप्लीमेंट्स अ कंपोनेंट। इस चीज को दिखाने के लिए द टर्म दैट वी यूज इज मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव कंपोनेंट हियर, this is your component database manager, this is a component, this component is implemented by another artifact, that is this is your artifact or a file, this component is implemented by this artifact, that is data manager dot dll. तो अगर कंपोनेंट डायग्राम होता तो इसी कंपोनेंट एक्सटेंड करते, इसमें 3 ब्लॉक वाला बनाते, थर्ड ब्लॉक में लिख देता आर्टिफैक्ट। बट अगर यही चीज डिप्लॉयमेंट डायग्राम में शो करनी है, सो यू विल शो विद द हेल्प ऑफ अपना वही सदाबहार डिपेंडेंसी एरो, उसके ऊपर स्टीरियोटाइप यूज करेंगे मैनिफेस्ट को। पहले इंप्लीमेंट भी बोलते थे प्रीवियस इन द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ यूएमएल, बट नाउ इन 2.0 दिस इज नोन एज मैनिफेस्ट, ओके। इसका मतलब है दिस डायग्राम मींस दिस आर्टिफैक्ट डेटाबेस मैनेजर डॉट डीएल मैनिफेस्ट और इंप्लीमेंट्स, ऐसे भी याद रख सकते हो, इंप्लीमेंट्स दिस डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कंपोनेंट ही हो, खाली एक चीज और, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस इज अ कंपोनेंट, यहाँ पे पूरा का पूरा एक यूज केस डायग्राम लगा सकता हूँ मैं, आर्टिफैक्ट इंप्लीमेंट्स दिस यूज केस डायग्राम, यहाँ पे एक क्लास भी लगा सकता हूँ मैं, दैट दिस आर्टिफैक्ट बेनिफिट्स और दिस आर्टिफैक्ट इंप्लीमेंट्स दिस क्लास। सो देयर कैन बी एनी यूएमएल कंपोनेंट, यहाँ पे कोई भी एनी, मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, देयर कैन बी एनी यूएमएल कंपोनेंट। एक आर्टिफैक्ट किसी भी यूएमएल कंपोनेंट को मैनिफेस्ट कर सकता है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बस एग्जांपल के लिए कंपोनेंट डायग्राम, कंपोनेंट बनाए, यहाँ पे क्लास हो सकती है, यूज केस हो सकता है, पैकेज हो सकता है, खुद इंटरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी एनी यूएमएल कंपोनेंट। और टेल मी whether true or false, an artifact can implement
stereotypes also. हमेशा ट्रू है स्टेटमेंट। पहले वाली स्टेटमेंट क्या थी? आर्टिफैक्ट कैन इंप्लीमेंट एनी यूएमएल कंपोनेंट। क्या स्टीरियोटाइप एक यूएमएल कंपोनेंट है? तो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा मैंने टेस्ट में तुम लोगों से। स्टीरियोटाइप एक यूएमएल कंपोनेंट नहीं है। तो आर्टिफैक्ट हर यूएमएल कंपोनेंट, तो आर्टिफैक्ट हर स्टीरियोटाइप को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, राइट? You have to join the dots also. The first statement that I made true is artifact can implement any UML component. और ये stereotype, tagged values, constraints, ये सारी UML component नहीं है। 2-3 बार टेस्ट में पूछ चुका हूं मैं, if you remember. Right? So these are not UML components. These are extra functionalities that are provided by UML. पहले से UML के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में नहीं है। एक डायग्राम है आपकी फर्स्ट स्लाइड में, बेसिक्स वाली में है या यूएमएल वाली में, आई डोंट रिमेंबर। इसमें पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, बेसिक ब्लॉक ऑफ यूएमएल। उसमें जितनी चीजें मेंशन्ड है बस वो यूएमएल के अंदर है। और उसमें बेसिकली ये मेंशन नहीं है, स्टीरियोटाइप मेंशन नहीं है, टैग वैल्यूज मेंशन नहीं है, कंस्ट्रेंट्स मेंशन नहीं है और एनोटेशंस मेंशन नहीं है। ये 4 चीजें हैं जो यूएमएल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में नहीं आती हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सटेंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूएमएल। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं 4 चीजें। फाइन। So this is the meaning of manifestation, that these artifacts, here a node web server have component which is implemented by artifact. Yes, यही मतलब है इस डायग्राम का। okay? और बेसिकली एक और मतलब है that this web server is artifact database manager dot dll। पहली बात तो अगर ये artifact इस नोड के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? इस आर्टिफैक्ट को इस नोड की जरूरत है और दिस आर्टिफैक्ट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड बाय दिस वेब सर्वर नोड। यस और नो? पहला मतलब तो ये है, आर्टिफैक्ट्स अगर प्रेजेंट है किसी नोड के अंदर, एवरीवन, so this means that this artifact is going to be implemented by this web server node। पहला मतलब तो ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। Second, this also tells you that this artifact database manager.dll is going to implement this component database manager, is going to manifest this component database manager। दूसरा मतलब ये है, यही दो मतलब है इसके। फाइन, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? देखो अभी तक इफ यू सी in all the examples we are just seeing only one, you know, क्या बोलते हैं इसको, वन नोड ओनली। वी आर जस्ट सीइंग वन नोड ओनली। सो अगर एक ही नोड बनाओगे, उसी नोड के अंदर कंपोनेंट, उसी नोड के अंदर आर्टिफैक्ट्स बना रहे हो, एक से ज्यादा नोड्स नहीं बना रहे हो तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम नहीं हो। ओके, तो कोई मतलब नहीं है, वो बनाने तो बना दो बट इसका कोई सेंस नहीं बनता है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम मींस यू हैव टू शो डिफरेंट हार्डवेयर्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद देयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, तभी पूरा एक सिस्टम बनेगा ओवरऑल। सो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन पाथ्स। ओके, सपोज दिस इज माय वन node, any hardware, this is my another node, इन दोनों के बीच में we have to show the communications। उसका सिंपल सा एक ही रिलेशनशिप है हमारे पास, that is your association। पूरे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में सिर्फ 2 ही रिलेशनशिप यू कैन यूज, बेसिकली 3 विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्ट। फर्स्ट इज योर डिपेंडेंसी एरो, ओके, जो किसी भी आर्टिफैक्ट्स के बीच में शो कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स टू आर्टिफैक्ट्स। सेकेंड इज योर मैनिफेस्ट, ओके, जो किसी आर्टिफैक्ट से एनी यूएमएल कंपोनेंट में शो कर सकते हो। एंड थर्ड इज योर एसोसिएशन, जो कि नोड टू नोड शो करोगे। मेक अ नोट ऑफ दिस, ओके, क्योंकि आप नोड टू नोड शो करोगे। यही 3 वी हैव सीन आई थिंक। सो दीज 3 ओनली आर there in the deployment diagram। Okay, so if you want to show any relationship between 2 different nodes, you will use association like this, normal association। और association के ऊपर stereotype देना कंपलसरी है नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, खाली भी शो कर सकते हो। बट टेक्निकली जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काम होता है, जो फाइनल डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनता है, उसमें दे विल शो द स्टीरियोटाइप्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, दिस इज शोइंग यू दैट दिस नोड 1 एंड दिस नोड 2 कनेक्टेड ओवर अ एचटीटीपी लिंक। इसका ये मतलब आ रहा है। ओके, सो कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं, लिमिटेड नहीं है बट ये कुछ कॉमन है विच यू कैन यूज। अब यूज कर सकते हो जब 2 नोड्स को कनेक्टेड दिखाना है, एंड यू वांट टू शो एसोसिएशन बिटवीन 2 नोड्स, उस एसोसिएशन लिंक के ऊपर व्हाट स्टीरियोटाइप्स यू कैन यूज, यहाँ पे कौन से स्टीरियोटाइप्स यूज कर सकते हो, ये बात हो रही है। तो नॉर्मल एचटीटीपी यूज कर सकते हो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड, टीसीपी आईपी यूज कर सकते हो, आरएमआई यूज कर सकते हो अगर एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है तो। ओके, ये यूज करते हैं लोग एक्चुअली। ओके, इसके बहुत टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया रखो ये सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम में। ओके,
JDBC, ODBC, RPC, असिंक्रोनस। ओके, अगर इन दोनों के बीच में कोई सिर्फ एक तरफ से मैसेज का फ्लो है तो असिंक्रोनस। सिंक्रोनस, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो एक मैसेज भेजेगा, दूसरा भी रिप्लाई करेगा, काइंड ऑफ थिंग। वेब सर्विसेज और भी इसके सिवा हो सकते हैं। Okay? So these are basically your stereotypes that you can write on the association link when two nodes or two hardwares are connecting with each other. For example, see this diagram. This is a full-fledged deployment diagram. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, पर इतना भी हमें नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जांपल हियर इज अ नोड। क्या है, नॉर्मल है या वो है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट? नॉर्मल हार्डवेयर है, राइट? अगर इसको मैं ऐसे चाहे, इसको मैं ऐसे डिवाइस स्टीरियोटाइप आई कुड हैव यूज्ड, दोनों का मतलब सेम होता, राइट? चाहे आई राइट ब्राउजर क्लाइंट और आई राइट डिवाइस स्टीरियोटाइप अलोंग विद द ब्राउजर क्लाइंट, दोनों का मतलब सेम होता। With this node or this hardware browser client is connected with another hardware web server with the help of a HTTP link or HTTP stereotype. This web server device is connected with another device application server with the help of a RMI stereotype. तो इसका फुल फॉर्म भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बस पता होना चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं। एंड इस एप्लीकेशन सर्वर नोड के अंदर यू हैव टू मोर नोड्स। देखो, एक नोड के अंदर भी नोड्स हैं, वो भी आपस में एसोसिएशन लिंक से कनेक्टेड है। थिंक दिस, ऐसे आर्टिफैक्ट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते थे आप। यू कैन नॉट कनेक्ट टू आर्टिफैक्ट्स लाइक दिस। अगर दो आर्टिफैक्ट्स होते उनको ऐसे एसोसिएशन से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको नहीं कर सकते थे। डिपेंडेंसी अच्छा, जस्ट टेल मी whether this statement is true or false. Can I show manifestation relationship between two artifacts? No, right? Again the same logic applies. Artifact क्या है? Artifact खुद में एक stereotype ही है। Artifact is a stereotype in itself. एक आर्टिफैक्ट से किसी दूसरे यूएमएल कंपोनेंट को तो कनेक्ट कर सकते हो, बट अगर दूसरे आर्टिफैक्ट को कनेक्ट करने की बात मैं कर रहा हूं, सो आई एम अगेन द सेम स्टेटमेंट, यू आर कनेक्टिंग आर्टिफैक्ट विद अ स्टीरियोटाइप, दैट इज अ नो, राइट? Two artifacts can be connected with the help of dependency here, and two nodes can be connected with the help of association link. तो उसके ऊपर चाहो तो स्टीरियोटाइप लिख दो, पता है तो, नहीं पता तो यू कैन इग्नोर ऑल्सो। फाइन, एनी डाउट्स? ठीक है, क्लियर? सो विद दिस योर सिलेबस फॉर ओईडी इज फिनिश्ड। इतना ही था, सारे पीपीटीज आपके अपलोडेड है ब्लैक बोर्ड पे। आई थिंक योर एग्जाम डेट हैज पोस्टपोन्ड, राइट? 14 से हो गया है। अभी एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होगा एंड सम का आई आल्सो डोंट नो, जब पता चलेगा विल सी। बट फॉर नाउ टुडे इज 9th, राइट? ऑन 11th नवंबर, वैसे तो सरप्राइज टेस्ट लेने वाला था, बट इन्फॉर्म कर देता हूं मैं, 11 नवंबर को एक टेस्ट लूंगा इन द क्लास इटसेल्फ। दिस विल बी योर टेस्ट 4, आई थिंक, राइट? दिस विल बी योर टेस्ट 4, सरप्राइज टेस्ट को इंक्लूड करके टेस्ट 4 है ना? दिस विल बी योर टेस्ट 4। syllabus will be after mid-sem. After mid-sem, whatever we have read till now, that will be your syllabus. One assignment also I will give you, आज कल में दे दूंगा, that you can take time and submit by 22nd November after your Diwali break, है ना? पूरे सिलेबस का असाइनमेंट होगा, आराम से टाइम लेके कर लेना। आफ्टर योर दिवाली ब्रेक बाय 22nd November you can submit the assignment. और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेंगे ऑन 30th November। एक बार पता चल जाए पेपर का पैटर्न क्या है तुम लोग के एंड सेम का, तो उसी हिसाब से टेस्ट ले लूंगा, सो दैट इट कुड बी अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट आल्सो फॉर यू। एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेंगे ऑन 30th November। पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, एमसीक्यूज हैं कि थ्योरी भी है, क्या है कैसे है, उसी हिसाब से टेस्ट ले लूंगा। सो यू विल गेट एन आइडिया आल्सो हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी फॉर यू एंड सेम। विद दिस द सिलेबस, the subject will be finished already. Fine. Any doubts you have? So it's a easy subject, okay, not very tough. अगर एंड सेम में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर डायग्राम्स कैसे बनाओगे ऑनलाइन अगर थ्योरेटिकल हुए,
एमसीक्यूज हुए तो जिस पैटर्न पे आ रहे उसी पैटर्न पे होंगे। बाकी लेट द यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई वंस हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी। ये जो फाइनल टेस्ट होगा उसी पैटर्न पे लूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू। बाकी यू हैव टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, ये नॉर्मल अपना वही एमसीक्यू होता है अभी तक। आफ्टर योर मिड सेम इज द सिलेबस, एक असाइनमेंट दे दूंगा 22 नंबर तक सबमिट कर देना, दैट्स इट। बताइए सिलेबस में, ओके इट्स अ इजी सब्जेक्ट, ऑल द पीपीटीज आर अपलोडेड ऑन योर पोर्टल। ऑन द ब्लैकबोर्ड वन फोल्डर इज मेंशन्ड नेम्ड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, उसके अंदर बाकी सब कुछ नहीं तो कम से कम एक एक्स्ट्रा पीपीटीज का सेक्शन है, उसको एक बार देख लेना, क्विकली स्कैन कर लेना, क्विकली स्कैन कर लेना सारी पीपीटीज को, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए दैट यू हैवंट रेड बिफोर, इट विल बी इजी टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स ऑब्वियसली। पास होना है तो अलग बात है। एनी डाउट्स यू हैव?